Hey everyone, welcome you all. Namaskar, Samastanko. Good morning. Today we are going to start a very interesting, effective, and most important chapter of the constitutions. And constitutions, we know that it is the what? Supreme law of the country. It is the a legal document which is the supreme law in our country, where the entire country governs, whether it is people, we the people, the government, or the various institutions. Everybody follow the constitutions. Nobody is above the constitutions. Neither you nor I nor any individual. In our country, the supreme is the constitutions. And we know that our country's constitutions, it is the largest written constitutions in the entire world. Our country's constitutions, it is the most vibrant, most effective, most democratic constitutions in the entire world. आमे जानिचे कि the times where our constitutions was enacted, during that time 395 articles are there. At present more than 448. During that time 8 schedules were there. At present 12 schedules were there. During that time, it means that up to January 26, 1950, 22 parts were there. At present, how many? 25 parts are there. It is still expanding without violating the core things. That is our constitutions. Got it now? And today we will discuss about fundamental rights. Okay? How many parts are there in our constitutions, guys? Our constitution re keteta part ache? Keteta? 25 टा पार्ट एबे अछि. Part 1 deals with the what? Part 1 deals with the entire union and its territory. Union and its territory. Part 1 deals with the what? Part 1 deals with union and territory. Union and its territory. Fine. Part 2 deals with the what? Citizenship. Part 2 deals with the what? Citizenship. Part 3 deals with the what? Fundamental rights. Okay. Part 4 deals with the what? Directive principle of state policy. In fact, Part 4A also deals with the what? Fundamental duties. Part 5 and many more are like that. How many parts in this way? 25 number of parts are there. Okay, and today we will discuss about fundamental rights. आज ही हमें discuss करना fundamental rights in detail. Fine, clear? Let's. So the fundamental rights in our country, it is in the part 3 of our constitutions. So fundamental right, where it is located? It is in the part 3 of our constitutions. And like part 1, it was deals with the 1 to 4 articles. Part 2 deals with the 5 to 11. And part 3 deals with the articles 12 to 35. Ketet articles ki total 395 thila, 448 ru adhika. So part 3 deals with the articles 12 to 35. And ame padma at 12 to 35 articles in detail. But before that, first of all, we have to know what is fundamental rights. Fundamental rights বা মৌলিক অধিকার কহিলে কোন বুঝ? আমি কানা বুঝুছা कि মৌলিক কহিলে basic, a minimum rights. A basic or minimum rights are which are enshrined in the constitutions. যে কোনসি মৌলিক অধিকার বা বেসিক রাইটস আমার সংবিধানে মেনশন করা হইছে আর্টিকল 12 রু 35 বা পার্ট 3 রে তাহাকে আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমি কহুছা. গট ইট? ক্লিয়ার না? ফান্ডামেন্টাল রাইটস যদি নাই থিতা তাহা হলে সিচুয়েশন ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল. আমি ই জেনারেশনস রে রহুছা, we have been enjoying the fundamental right. आमे एंजॉय करू जा फंडामेंटल राइट के. दैट इज द रीजंस आमे जहां भी जेन भी प्रोफेशंस
जेन भी जॉब करवार लगी कि जेन भी ऑक्युपेशन स्पोर्ट्स हो मूवी हो जहां भी करवार लगी चाहू जा करि पारुछा जहां भी चाहू जा कहि पारुछा राइट ना पुलिस हमको तार मन इच्छा धरी कर नहीं नवार ओके जेन ठाने चाहला पाठ पढ़ी पारुछा जेन आडे चाहला बुली पारुछा एंटायर इंडिया रे जदि फंडामेंटल राइट नहीं थिता जस्ट इमेजिन उटे राजा शासन बा मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना प्रॉपर्ली कहि पारत इवन इफ जेल रे नहीं थिले भी जेल रे रहला अंतर लगता क्लियर ना तो फंडामेंटल राइट गुटे देश रो डेवलपमेंट लगी गुटे इंडिविजुअल्स रो डेवलपमेंट लगी इंडिविजुअल रो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट ओके तर कल्चरल डेवलपमेंट लगी very important what the fundamental rights. So what we understood for the development of the country, for the strengthening of democracy, the fundamental right is very important. Clear? Fundamental right, मौलिक अधिकार, basic rights. This is the core of the country. This is the core of any country's constitutions. Fundamental right in our country. It is article के 12 रो 35. How many fundamental rights are there, guys? There are at present 6 fundamental rights are there. But that time constitutions was constituted. During that time 7 number of fundamental rights were there. 7टा फंडामेंटल राइट्स थिला एबे 6टा अछि ता माने गुटे फंडामेंटल राइट जरा दैट वाज काना रिपील्ड नॉट माने से जागा रो हटे की आ गुटे जागा रे रखि दिया गला केने विथ द पैसेज ऑफ टाइम लेट मी आई विल टेल यू सो एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट 6 ओके गुटे फंडामेंटल राइट कटि गला केनटा सेटा आर्टिकल 31 रे अछि राइट टू property okay right to property article 31 रे थिला जेंटा हटै देई करी एबे सेटा 300 ए आर्टिकल्स रे रखा गला ओके केतेरा 300 ए रे बट एंड केते अमेंडमेंट थ्रू करा जीवा हमें जानि छ अमेंडमेंट माने काना ओके केते नंबर अमेंडमेंट रे 44th अमेंडमेंट कैन ईयर रे 1978 clear so at present 6 number of fundamental rights are there earlier it was used to be 7 aguru 7टा थिला गुटे हटे दिया गला आउ सेटा आउ गुटे जाय रखि दिया गला 31 के राइट फॉर प्रॉपर्टी वा राइट टू प्रॉपर्टी के हटे दिया गला केना रखा गला 300 ए रे 44th amendment जेंडा की एबे इन प्रेजेंट इट इज लीगल राइट्स legal rights got it okay fundamental is right is fundamental to the country basic to the country clear and आमे टी बुझी नमत की इधर कैरेक्टरिस्टिक्स बट कैरेक्टरिस्टिक्स बुझबार पूर्वरु टिक्की केतरा ई जिनिस क्लियर होला हाउ मेनी 6 नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी हटे गला फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कंट्री जेन टाइम रे हमर संविधान बना गला के बनाले constituent assembly रो members they have visited and they looked into the entire world's रो country रो constitutions के देखले आउ से constitutions से तो देखले यूएसए रो constitutions रू यूएसए रो मॉडल बाय यूएसए रो जेंडा बिल ऑफ राइट्स करा ही छे अधिकार राइट्स ना से बिल ऑफ राइट्स के सेठानु फॉलो काना करले इंडियन रॉ फंडामेंटल राइट तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स followed the principles of US's constitutions that was bill of rights okay but with the passage of time में कहमी जनता राइट टू इक्वालिटी रा आर्टिकल 14 रे अछि protections before the law equal before the law okay equal before the law equal was but mostly it was followed from which one USA bill of rights clear
ओके नेक्स्ट इनफैक्ट गोटे जिनिस बहुत इंपोर्टेंट कि पार्ट 3 is called as the Magna Carta of Indian Constitutions. Part 3 is called as the Magna Carta of Indian Constitutions. जदि क्वेश्चंस रे पढ़वा कि इंडिया रो मैग्ना कार्टा केन पार्ट के कहा जाउचे पार्ट 12 रू 35 why it is called as the Magna Carta काना this is very important guys why it is called as the Magna Carta okay entire world रे अगर मोनार्किकल थिला 1215 केबे 1215 माने 13th सेंचुरी भाव एप्रिल 25 सन 800 वर्ष पूर्वे यूके रो किंग जॉन से पहला करी से राइट्स किछि देइथिले तार पर तो फ्रेंच रिवोल्यूशन साइसे अच्छे बट फास्ट करी की जिनस राइट आइछ औ सेथि लागि ही औ पार्ट 3 डील्स विथ द व्हाट फंडामेंटल राइट्स that is the reasons the part 3 of our countries is called as Magna Carta of the Indian Constitutions fine clear not only that khali sate nahi part 3 is very important in for number of purposes and we will discuss the features हम पढ़िना तो so far what we understood take revise करना रिवाइज सदा वाला करूथिबो बुझुथिबो हमर कॉन्स्टिट्यूशंस रे 25 टा पार्ट अच्छे पार्ट 3 पार्ट 1 रा डील करूचे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 2 डील्स करूचे सिटीजनशिप पार्ट 3 12 टू 35 रा अच्छे जेंटा की फंडामेंटल राइट्स आगुरु केतरा थिला 7 टा एबे अच्छे 6 टा गुटे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 रे जेंटा थिला सेटा के 44th अमेंडमेंट 1978 रे हटेई देई करी आर्टिकल 300 ए रे एज ए लीगल राइट्स रखा हिचे फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स भीतर डिफरेंस काना फंडामेंटल राइट्स के केही भी नहीं पारबा ना इंडिविजुअल नहीं पारबा माने केही पब्लिक नहीं पारबा ना के गवर्नमेंट नहीं पारबा बट लीगल राइट्स इंडिविजुअल तो नहीं पारे किंतु गवर्नमेंट जदि चाहबा नहीं पारबा फॉर एग्जांपल तमर घर सामना रे उठे रेलवे ब्रिज जाउछे पर रेलवे ट्रेन जाउछे तो से केस रे का नहीं मोर जगह कोई भी निजे रखी पारबो का गवर्नमेंट रो प्रोजेक्ट थिबा crores of rupees से केस रे बाथरे 1000 crores of rupees थे से केस रे तमर जगह इंपोर्टेंट है बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ ग्रेटर मास और सेथि लागि गवर्नमेंट कंपेंसेशन देवा तार वैल्यूएशंस बा ताठन 3 टाइम्स अधिकार है तार पर तमनु नहीं पारो क्लियर सो लीगल राइट्स बट अदर राइट्स काना नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम एंड ई आवर कंट्री रे फंडामेंटल राइट हमें कहां के फॉलो अप करथिना यूएसए रो मोस्टली बिल ऑफ राइट्स के इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्लियर गाइस ओके नेक्स्ट you बुझिना in our country केतरा हम कहितली 6 टा फंडामेंटल राइट अछि how many 6 fundamental rights are there what are these but सेटा जानवर पूर्वरु let me tell you characteristics the features of fundamental right that is very important it is justiciable in nature or which means that it is enforceable which means that कि आमर संविधान रा कॉन्स्टिट्यूशंस काना जस्टिसेबल which means that कि धरिनियो केही भी केही इंडिविजुअल्स बा गवर्नमेंट लॉ नुआ लॉ बने करी कि जदि फंडामेंटल राइट्स के वायोलेट करबा जदि भंग करबा जेतला हम सब फंडामेंटल राइट्स गुटे गुटे पढ़मा जानबो से टाइम रा बहुत भल से बट फॉर द टाइम बिंग बुझो कि जदि किछि भी फंडामेंटल राइट्स
भंग करा जाए कहनी नुआ लॉ करिकी बा ऑर्डर करिकी बा कहनी भी वे रे से केस रे वी हैव एन ऑप्शन, वी द इंडिविजुअल हैव एन ऑप्शन टू रीच टू द कोर्ट फॉर रीएनफोर्समेंट से तार पुनरावृत्ति पई आउ थरे हमें कहा पाकु पहुंची परिबा सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट, क्लियर ना। सो इट इज जस्टिसेबल और एनफोर्सेबल and Supreme Court Article 32 रे आउ High Court Article 226 रे they are empowered, तांको पावर दिया नीचे कि they can reinforce the fundamental right, they can what reinforce the fundamental rights, clear। Supreme Court and High Court ठीक है डिफरेंस बुझी ना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल केते रे 32 केन पार्ट रे होचे पार्ट 3 इटा पार्ट 12 रे होचे। दिस इज द फंडामेंटल राइट, दिस इज नॉट द फंडामेंटल राइट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे कैन इशू द रीट इशू करिकी दे विल सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द citizens, clear na, they will safeguard the fundamental right of the citizens। First supreme court धरिनियो गोटे इंडिविजुअल वी द पर्सन्स कहनी इंडिविजुअल्स रो राइट्स वायोलेट हला फंडामेंटल राइट्स नॉट द अदर राइट्स, जदि इंडिविजुअल रा गोटे पर्सन्स रो फंडामेंटल राइट धरिनियो से वेस्ट बंगाल गला, वेस्ट बंगाल रो मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करा गला बा केही भी गोटे पर्सन्स के जेल में भर्ती कर देले विदाउट एनी रीजंस, तो से केस रे का हबा से केस रे से पर्सन्स पाखे ऑप्शन अछि कि से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पाखे गुहारी लगावा कि हे प्रभु ई सब प्रॉब्लम होचे और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के यूज करिकी सुनानी करवा। बट जनरली का है सी जनरली सुप्रीम कोर्ट कहे सी कि पहला हाई कोर्ट के जीवो, बट सुप्रीम कोर्ट को भी जाई परबो, जदि हाई कोर्ट के जाई नहीं पालो देन सुप्रीम कोर्ट पाके तमन डायरेक्टली फंडामेंटल राइट लगी ही अदर राइट लगी नहीं फंडामेंटल राइट्स लगी ही तमे सुप्रीम कोर्ट पाके जाई पालो और सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट और सेफगार्ड योर फंडामेंटल राइट और रीइंस्टॉल योर फंडामेंटल राइट, क्लियर तो बुझी गला। बट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट से गुटे से हाई कोर्ट निजर जुरिस्डिक्शन जेंटा थिबा से स्टेट की यूनियन टेरिटोरीज से अंडर रे जते लोग थिबे तांकर भीतर ता राइट्स एंड हाई कोर्ट्स दे कैन से फंडामेंटल राइट के सेफगार्ड करवा ही अदर राइट्स के भी से सेफगार्ड करि पारबा, तार माने दिस इज द मोर वाइडर फॉर्म, क्लियर ना। So the fundamental rights are justiciable in the sense because it protects through the article 20 article कहते 226 32 article 13 359 also, okay 13 टा डिटेल कहमी 359 कहमी, but for the timing बुझलो, okay both are there to safeguard the fundamental right, clear। And this is mainly for the fundamental right, it a fundamental right including any other purpose, clear to बुझी गला। the characteristics of what fundamental right, first one, next one, it is not absolute, it is not absolute, okay, which means that what human rights are absolute but it is not absolute, even if it is justiciable by enforceable certain reasonable restrictions can be imposed, reasonable restrictions can be imposed। हमें जानी से कि इंडिया रो कहनी पार्ट के भी we can move freely, but जदि law and order situations थिबा प्रॉब्लम से कैसे क्या हबा आर्टिकल्स 144 धारा लागू हवा
जेंथिरे लोक गैदरिंग करि नै पर रिसेंटली संबलपुर रीजन हला समस्त जानि छ ओके राइट्स रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साहोरी खराब होगा सिचुएशंस थिवा हेतिल लागि तमर मूवमेंट रे restrictions can be imposed free to speech and expressions आउ इना गुटी जिनिस जानबार अछि तमर अधिकार केते दूर तक अछि तमर अधिकार सेते दूर तक अछि जेते दूर तक आउ जनकर अधिकार भंग नै हबार क्लियर तो बुझी जाओ गलांगी नै नेक्स्ट the reasonable restrictions imposed hey parva that do not violate fundamental right reservations that do not violate fundamental rights and set down detailed कहमे right बुझी so it is not absolute it is justiciable in fact it strengthens the democracy and गोटे personality development लगी इटा बहुत important है okay clear next if it so these are the major characteristics of what fundamental rights केतेटा fundamental right अच्छे एबे 6टा 12 इटा definitions of state कहसी okay 13 I will use video बहुत बड़ ही जेबा हां so आमे देखमा गुटे गुटे नेक्स्ट वीडियो रे 12 रु 18 देखमा जेंटा के आर्टिकल्स काना 12 आउ 13 दैट इज वेरी इंपोर्टेंट 13 टा मु कहमी 12 भी कहमी 14 रु 18 राइट टू इक्वालिटी 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम ओके 19 रे ही 6टा मेजर फ्रीडम छै देन 23 24 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 25 26 27 28 राइट टू फ्रीडम रिलीजन secularism 29 30 cultural and educational right 31 40 दा वाला 32 but article 32 is called as the what it is a basic features of the constitutions it is a what basic features of the constitutions in fact article 32 as per the Dr. B.R. Ambedkar it is called as the heart and soul of the constitutions okay and 33 34 35 I will tell and तार importance जेते जेते वाला हम सब fundamental rights सारमा का हल्ला जे it is heart and soul and we will discuss one by one in detail बहुत भल से बुझमा बहुत important और बहुत effective one this one got it guys okay in fact छोटा तो this is the basic things relate to fundamental right आउ आपके आपुरी नेक्स्ट वीडियो रे हम 12 रु 18 पढ़बा आउ जहार भी किछि डाउट अच्छे just ask me this is very important guys because it empower us okay thank you very much and we will discuss in the next class okay and how you felt it comment it guys okay because सेटा मोर लागी ग्लूकोन डी है ओके तमर कमेंट तमर सजेशंस दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर मी फाइन सो हैव ए ग्रेट टाइम्स एंजॉय योर डे ओके हरे कृष्ण जय जगन्नाथ जय ओके